I'm going to start with you, Vivek. Yeah. So you've done several critically acclaimed roles. How is Inside Edge any different? Well, I think, let me start off by saying that it's great, when you're working with an organization in a company like Excel, they've been pioneers. They've always kind of opened, roads to a whole new kind of content, always been ahead of the curve, whether it was Dil Chahta Hai or films ever since then. They've always been reinventing. And it was really cool, to get a call from them and say that we're looking at doing this kind of a series on the web and to do it for the first time. And the world's changing. The world's changing the way they're consuming content. These two guys just don't change, Farhan and Ritesh. They stay young forever. I don't know what they have. But not only do they stay young physically, but they're also young in terms of the way they think. So they're ahead of the curve in terms of what consumption patterns are going to be for the audience of the future. And working with Amazon, Amazon's a huge brand. They're not only delivering even groceries to your home, but now delivering you the future with Inside Edge. So it was great. It was a no-brainer for me. And I loved the script that Karan brought to me. I loved the character of Vikrant Dhawan. I loved the whole all-powerful essence of that character. So yeah, I had fun doing it. विवेक, जैसे कि अभी रितेश ने बताया कि ये फिक्शनलाइज अकाउंट है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी पर आधारित है. तो किस तरह की प्रिपरेशन की, किस तरह की स्टडी आपने की, अगर कुछ उनसे इंस्पिरेशन लिया हो आपने? और हमने सुना था कि आप लंदन भी गए थे कुछ मिलने. आप तो जासूस है यार, जर्नलिस्टों के जासूस हो. I think keeping जो मेरा कैरेक्टर है विक्रांत धवन, उसका रंग, उसका एसेंस रखते हुए इनसाइड एज में मुझे कहना पड़ेगा कि 10 जुलाई तक इंतज़ार कीजिए और देख के खुद ही जांच लीजिए. कुछ तो बताइए. जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये किसी की निजी कहानी पर आधारित नहीं है. प्रेरणाएं हैं जो पूरी जो क्रिकेटिंग की दुनिया है या लीग क्रिकेट की दुनिया है, उसके ऊपर कुछ प्रेरणाएं लेकर उस पर आधारित कुछ किरदार क्रिएट किए गए हैं. उसमें से एक विक्रांत धवन है जो एक मास्टरमाइंड है, एक पपेटियर है. संचालन पूरा वो करता है उस गेम का जो गेम के पीछे हो रहा है, जो बुकीज के बीच में हो रहा है, जो बेटिंग की दुनिया में हो रहा है, स्कैंडल की दुनिया में हो रहा है. एंड उसका एक रस है, उसका एक मज़ा है, अलग अंदाज है. एक ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑल पावरफुल ऑमनी प्रेजेंस है उसका. एक हर जगह में कहीं ना कहीं उसका हाथ आपको महसूस होगा. तो वो करने में बड़ा मज़ा आया. विवेक, हाय. हमने देखा आज ही आपकी फिल्म रिलीज हुई, वायरफ की फिल्म बैंक चोर. लोगों को रिव्यू किया मैंने, लोगों को आपका किरदार बहुत ही पसंद आ रहा है. इसके पीछे आपने और एक फिल्म की थी साथिया, तो वायरफ के साथ में, और आगे भी हम आप देखेंगे वायरफ के साथ में कंट्रीब्यूशन. सबसे पहले तो आपको नए चैनल पर बधाई. थैंक यू. आपको भी. नाम क्या रखेंगे? सब सवाल यही पूछ रहे हैं. फिलहाल अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे जुड़े हैं. वायरएफ के साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आया और एक्सेल के साथ में भी काम करने में बहुत मज़ा आया. आप अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वक्त रितेश से पूछिए कि वो मुझे आगे किसी चीज़ के लिए साइन करने वाले हैं या नहीं. पुट हिम ऑन द स्पॉट. Hi, Karan. Good evening, everyone. Bhavna from Z News here. Guys, Inside Edge is about cricket की रियल गेम के पीछे की गेम. हमने बहुत बार रियल लाइफ में मैच फिक्सिंग के किस्से सुने हैं. इनफैक्ट आज ही एक पाकिस्तानी सिंगर ने एलिगेशन लगाया है कि पाकिस्तान को लास्ट के 2 मैचेस इसलिए जिताए गए हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल में सामना हो सके. ये जानने के बाद हाउ डू यू सी दिस गेम जो परसों मैच होने वाला है? विवेक, I think Nitesh. I think everyone can react on that. अगर आप लोग क्रिकेट के फैन हैं और आप ये मैच Let the analyst answer. But is this your assumption? Is it your assumption? Yeah, is it that your What were the that this was statistics planned involved? that India and Pakistan will? So I think firstly we don't know कि इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं. But after you. But the spirit of Inside Edge,
the spirit of Vikrant Dhawan, the character I play in the show. See, when we're watching cricket, somebody or the other in the room, in an office, in an atmosphere, when you're together watching a match, always says, "Arey yaar, chhodna yaar, fix hai." You know, "Arey chhodna yaar, paisa khilaya hai." "Arey ye to janbujh ke haar rahe hain." "Arey ye to ye hai, ye to wo hai, is pe satta laga hoga, bet laga hoga." So I think somewhere we're kind of encapsulating fictionally that spirit, that curiosity that's always there. "Arey aisa hota hoga kya?" Also, when we say satta laga hai, what do we know? हमको कैसे पता है कि सट्टा कैसे लगता है? उसके wheels within the wheels कैसे चलते हैं? What I loved what Karan brought to this show when I first read the script was there's an exploration of that whole journey. सट्टा शुरू कहाँ से होता है? कहाँ से लगता है? लोग कैसे उस पे लगाते हैं? गेम खेलते कैसे हैं? What is the game behind the game? The exploration of that is fascinating, and I think that makes for a whole new world that Inside Edge creates and allures you, invites you into. So I think that's the critical question. And चाहे कोई कुछ भी बोल ले, इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को मैं खुद भी देखूंगा. I'd like to add something to that. I echo Farhan's sentiment, and I'd like to say, you know, when Ritesh first told me about this as a web series, he said, don't look at it as a web series. Look at it as we're going to be shooting it like film. And 4-5 बार बातें हुई, and he said, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत महंगी बन रही है. He kept saying that. And, you know, in the process, आपको समझ में नहीं आता है. You don't realize it. But when you see the finished product, when you see that trailer, then you realize what these guys have done. They've gone out there and really made a quality product to give it an international look, not just to say कि हम हिंदुस्तान के लिए बना रहे हैं, but I'm proud and I'm really happy and fortunate to be a part of a show that both XL and Amazon are endeavoring to take globally. यार हमारे यहाँ से बन रही, हम बाहर के shows देखते रहते हैं हिंदुस्तान में. It's a great time for India when our content goes out there and looks as, you know, full on and